Here, as the number of sellers are very high, we can see that every seller will have to incur heavy expenditure on advertisement, publicity, salesmanship, etc. जैसे आप देखो ये अलग अलग फोन अपने कितने सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं. Elastic demand. Now, what do you mean by elastic demand? Can anybody tell me? इलास्टिक डिमांड का मीनिंग बताओ. मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. नहीं, वो इलास्टिक डिमांड का सिंपल मीनिंग क्या रहता है मैं बताऊं आपको. अ स्मॉल चेंज इन प्राइस. रुचिक, a small change in price will bring big change in quantity demanded, then that is elastic demand. मैं जब बोलूंगा inelastic demand, तो a change in price will bring small change in quantity demanded, then that is inelastic demand. तो यहाँ पे elastic demand है. As many substitutes are available, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ₹1 भी कम कर दूं, I can expect that more number of buyers will buy my product. The demand will largely increase. Demand will largely rise. The demand curve would be flat demand curve or slightly sloping demand curve. Concept of groups. So in this market, there will be concept of group. In this market, there will be group of sellers who are producing closely related products. जैसे we can see, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, अलग अलग एग्जांपल बताया. दे आर कॉल्ड एज ग्रुप, और उस ग्रुप को हम इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे. दैट ग्रुप वुड बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट? तो यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ओवर. जस्ट गो थ्रू दोस फीचर्स एंड उसमें आपको कुछ डाउट है तो पूछो. फिर मैं एक और टाइप का मार्केट आपके साथ डिस्कस करके आई विल एंड अप द डे फॉर टुडे. और एक मार्केट डिस्कस करना है. गो थ्रू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कुछ डाउट है तो पूछो. Is there any doubt into that part?
Okay, so now we would describe the concept called as oligopoly. Oligopoly. It refers to the market structure where there are few sellers and large number of buyers dealing in differentiated products. It refers to the market structure where there are few sellers and large number of buyers. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो, क्लियर बताया कि इस मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स, जैसे सब जगह पे हम बोलते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मेनी सेलर्स, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है. देयर आर फ्यू सेलर्स. The number of sellers are so few that we can count them on the fingertips. We can count them on the fingertips. So let us understand it with the help of features. के फीचर्स के साथ में हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं. इसका सबसे पहला फीचर है लार्ज नहीं है इसमें, सॉरी. सबसे पहला फीचर है फ्यू sellers. The number of sellers into this market are very few. आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. मेरे को नाम बताओ, ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करने वाले फर्म्स के नाम बताओ मुझको. ऑटोमोबाइल्स बनाने वाले फर्म के नाम बताओ मुझको. टाटा है, देन फोर्ड है, देन स्कोडा है, मारुति है, होंडा है, ह्युंडई है.
We can see that we can count them on the fingertips. We can count them on the fingertips. Am I right? Similarly, take example of airline industry. देखो, बताओ मुझको एयरलाइन इंडस्ट्री में एमिरेट्स है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस. वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देखो नाम बताओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईपीसीएल, रिलायंस, शेल. They are all examples of oligopoly market. Few sellers. दूसरा फीचर इसका क्या रहेगा? Large number of buyers. In an oligopoly market, the number of buyers in an oligopoly market, the number of buyers are extensively large. They are so large that a single buyer cannot influence the market, but collectively they can. तीसरा फीचर है इसके अंदर differentiated products. In this market also the products are slightly different from each other. Product would be slightly different from each other. Similar रहेंगे but slightly different. चौथा फीचर इसका है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. In oligopoly market, if the sellers witness, if the sellers see that there is extensive profit available, a new seller can enter into the market. And अगर इस market के अंदर उनको आके loss होता है, the existing seller can leave the market and go away. So there is free entry and free exit to the sellers. Huge selling cost. In this market, there will be huge selling cost. Again, I ask the same question. What are the selling costs? Can you let me know? The cost incurred on selling the product, the cost like advertisement, publicity, etc. Why? There will be huge selling cost because in this market, the sellers are competitors. Few sellers are, but they are stiff competitors of each other. And thus, in order to capture the market, they will have to incur heavy expenditure on advertisement, salesmanship, etc., etc.